Okay, so far we have talked about the why aspect of an essay. So we try to look at different things. Okay, now we'll move on and we'll try to see what aspect of an essay. This would concern that what is to be included in the essay, what is to be excluded in the essay. ठीक है, हमें कैसे लिखना है, कैसे जाना है, क्या चीज़ हमें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करनी है. तो विल ट्राई टू लुक एट दोज थिंग्स. ठीक है. सी द फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू हियर, ये हमने कर लिया. This is the most important aspect of any essay, and this is something that remains the USP of one's essay, the innovativeness or the originality. Okay, essay should not be like essay ऐसे नहीं होना चाहिए, kind of a copy paste thing. ठीक है, that should not be there. Okay, it is something that has to be very original. Usually what we do, we would blindly write about thinkers. तो हमने बहुत सारा पढ़ा होता है about these thinkers, philosophers, scholars. So what we try to do, we try to assert our knowledge by using these philosophers, thinkers. But अगर हम actual में देखें, it looks very abstract if we just quote these thinkers or philosophers as far as essay writing is concerned. So original would mean, see what original would mean is using examples. जितना आपसे बन पाता है उतनी examples आप दे दीजिए. ठीक है. That is something that would make it original. या जो thinkers है, connect them with reality. This is very important. I'll give an example कि चीज़ों को आप ओरिजिनल कैसे बना सकते हो. भले चाहे कोई चीज़ किसी और ने कही हो, लेकिन उस चीज़ को आप अपना सकते हो. एंड we have to learn the art of how to do that. ठीक है, because I told you that originality, it is the USP of an essay. ठीक है, and this is something that brings in this thing, distinctiveness in our essay. This is how it brings the distinctiveness in your essay. कि usually हम सभी लोग सेम मटेरियल या सेम बुक्स, सेम NCERT, सेम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो उस हिसाब से जब भी हम लिखें तो मोरलेस हमारा जो कंटेंट है वो सेम ही होगा. तो देन व्हाट मेक्स योर एसे डिफरेंट फ्रॉम माय एसे, दैट डिस्टिंक्टिवनेस, दैट इज आल्सो ब्रॉट बाय ओरिजिनलिटी और इनोवेटिवनेस. तो एंड हाउ टू ब्रिंग इनोवेटिवनेस, यू हैव टू यूज एग्जांपल्स, प्लेथोरा of examples. Okay, and then of course you have to make these abundant thinkers over there. अब सी हम थोड़ा सा ओरिजिनलिटी की मैं एग्जांपल आपको देता हूं, दैट थिंकर्स आपको कनेक्ट विद रियलिटी कैसे कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव एक्चुअली एन आइडिया कि ओरिजिनलिटी क्या होती है. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन social thinker called Chalcott Parsons. फाइन. तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जो स्कूल होता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक between family and society. This is his concept. This is his concept that school or education system, it's a connecting link between family and society. ठीक है.